So, students, new sections. Good afternoon to all of you. Am I audible to you? Please raise your hands. Every section. That's good. That's good. Hardy, am I audible to you? Am I visible to you, Hardy? Please raise your hands. Okay. But I'm requesting camera control. Please give me camera control, Hardy. Thank you. Thank you, ma'am. So, good afternoon to teachers. Good afternoon, students. So today, all new faces, all new classes, and I think I'm new to you. You must have met last year. How many students have met me last year on the screen? Yes, everybody, I think. Boss also. Hands down, hands down, hands down, hands down. Thank you, thank you. So wonderful. I'm feeling good to see you again. I hope you must be feeling good. Yes or no? चलिए सीधे बैठिए. Sit straight. है ना, ऐसे ढीले से बन के नहीं. Sit straight, back straight. Everybody, sit straight. सीधे होके बैठो. Girls, Hardy, सीधे होके बैठो बेटा. पीछे को होके बैठो. टेबल पे don't lean on the table. Don't. You are young, you know. Blooming students. है ना, fresh students एकदम full of energy. Right? So here, concentrate. Students are full of energy, but it depends where they use their energy. If you use your energy in the right way, like Gauss, like Napier, like Fermat, like Pascal, but not Hardy. In Hardy, students are still disoriented. Hardy students, get up. Sona nahi beta. Seedhe hoke baitho. Are you okay beta? So, be attentive. Right? This is an interactive class, you know. I will ask questions. Right? So, big class, big brains, intelligent students, and it will be the fun to interact with you in this class. Right? Will you enjoy? ठीक है, enjoy करेंगे ना साथ में, जवाब देंगे, आंसर देंगे मुझे. ठीक है, चलिए. So, let's do, biology. What is biology? Can anybody tell me? Yes, Hardy. Hardy में बेटा मिडल रो हार्डी फर्स्ट गर्ल टुवर्ड्स राइट साइड. आ जाओ, माइक पे आ जाओ. हार्डी में मिडल रो में जो फर्स्ट बेंच पे जो दो गर्ल्स बैठी है, राइट साइड में जो लड़की है, वो आ जाइए आगे माइक के पास. मेरी आवाज सुन रही है हार्डी में? बेटा रेज योर हैंड्स इफ आई एम ऑडिबल. हार्डी, हाथ खड़े करो हार्डी में अगर मेरी आवाज आ रही है. रेज योर हैंड्स. ओके, चलिए. तो अब आ जाइए मेरे पास मिडिल रो में से. हार्डी में जो मिडिल रो में फर्स्ट बेंच पे गर्ल्स बैठी हैं, एक गर्ल राइट साइड वाले माइक पर आइए. चलिए, आ जाओ आ जाओ. कम 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 कम, क्विकली. स्टैंड अप स्टैंड अप. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. इनको सुन रहा है. चलिए, नेपियर. यस, नेपियर में बेटा मिडिल रो में सेकंड बेंच पे द गर्ल हु इज सिटिंग. कम कम नियर द माइक. कम क्लोज टू माइक. स्विच ऑन द माइक. माइक स्विच ऑन करो बेटा. हाँ मैम करवाते. मैम जरा माइक इन बच्चों को थोड़ा सा बताना. ओके बेटा, पहले बोलो से गुड आफ्टरनून. लेट मी सी. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ गुड, है ना, यू आर ऑडिबल. आई
I'm asking you the question, will there be tell me, will there be any life if there is no sun? Any life on earth? Anji beta, tell me, will there be any life on earth if there is no sun? Yes or no? No. Why? 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 Tell me, Napier Gadaga, why there will be no life? That is absolutely true. Why? Because there is constant light. Once more, plants cannot profit us. अच्छा, okay. You sit another girl in the middle row जिनके हाथ खड़े हैं वो आगे आओ. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. बेटा you go to your seat. हाँ जी बेटा. There will not be answer because I was only so one that give us heat and light. So if the sun will not be there, it will not give us heat and light. The light will not be constant. बैठो, माइक ऑफ कर दो, बैठो. चलो हम भी देखते हैं. और एवरीबॉडी ओपन योर रजिस्टर्स, ओपन योर रजिस्टर्स. मूवी तो हमने देखनी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा नोट भी करेंगे, राइट? मूवी एज वेल एज रिटन वर्क. एवरीबॉडी. हार्डी बेटा अपने रजिस्टर्स निकालो. हार्डी चेक योर ऑडियो. मैम को कहो. So first thing what will we do? Ki the most important मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज. Am I audible to you, Hardy? Yes or no? Yes. ओके. अगर आ रही है तो अपने रजिस्टर्स निकालो बेटा. हम कोई मेले में तो आए नहीं. रजिस्टर्स निकालो, अपने कॉपीज निकालो. Everybody, bring out your copies, register. And how many students have got the assignment? Please see. नहीं मिली है. अगर इनको असाइनमेंट्स नहीं मिली तो असाइनमेंट्स थोड़े से प्रोक्योर करके वो इनको दो. Did you get the assignment, students? Yes or no? No. Teachers, please check इनको assignment मिल जाए. So the most important, ध्यान से सुनना है पहले फिर लिखना है. Whatever I will tell you, you will write only that. First, listen to me. The most important natural resource for life on earth is, सबसे important क्या है? This is sunlight. Sunlight is the most important natural resource. Why? Why sunlight? Because reason assertion का question बनता है. So write down here. Assertion. This is assertion.
and reason is sun is the ultimate source of energy on earth. So you will tell me in फॉर्मेट में बेटा टुवर्ड्स विंडो फोर्थ बेंच पे जो बॉय बैठा है वो आ जाओ फॉर्मेट में टुवर्ड्स विंडोज चौथे बेंच पे मैम प्लीज कोऑर्डिनेट फोर्थ बेंच पे जो बॉय बैठा है उसको भेजो जरा माइक पे तो बेटा माइक ऑन कर दो मैम प्लीज थैंक यू बेटा आपने मुझे बताना है इज असर्शन करेक्ट कि रॉन्ग रीजन की स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है यू हैव टू टेल मी यस फॉर्मेट बेटा पहले से हेलो चलिए अब बताइए आवाज आ गई आपकी मैम की तो आवाज आ गई आपकी नहीं आई बेटा मुझे द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर लाइफ ऑन अर्थ इज सनलाइट इज इट ट्रू कि फॉल्स इट इज ट्रू दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट देन रीजन की स्टेटमेंट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ ट्रू और फॉल्स दिस इज ऑल्सो ट्रू वेरी गुड नाउ यू विल टेल मी the most important natural resource for life on earth is sunlight because sun is the ultimate source of energy. This is true. Reason explain assertion or not? Yes. Reason explains assertion. Right? So write down this assertion reason. Write down. बिल्कुल ठीक आपने बताया वेरी गुड बैठो सीट पर चलिए बातें नहीं First, write down this. And then what is the answer? Answer is both assertion and reason are correct. And reason explains assertion. Reason explains assertion. ठीक है जी so this is one everybody write down because reason assertion questions are very important now my another question plants can synthesize food with the help of light. ये हम ठीक कह रहे हैं. This is okay. But how do animals, especially carnivorous, depends on light for food and energy? Yes, who will tell me? Pascal. पास्कल में टुवर्ड्स विंडो लास्ट सेकंड बेंच पे जो गर्ल है आ जाओ कम 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 कोई सी आ जाओ दोनों में से पास्कल में लेफ्ट साइड पे जो गर्ल बैठी है लास्ट सेकंड बेंच पे विंडोज की तरफ से वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ
Okay, first, what you have to tell me, what do you mean by carnivorous animals first? Beta, पहले switch on your mic. Say hello, let me see whether I may hear you or not. Speak loudly. Hello. Ma'am, please side. हाँ जी, अब बताइए, what do you mean by? First tell me the meaning of carnivores. Tell me quickly, what do you mean by carnivore? Let me give example. Which eat plants, which eat animals, yeah, which can synthesize their own food. What do you mean by carnivores? So, the animals which eat flash. flesh-eating animals, or you can say which feed on other animals. Absolutely correct. How? My question. कोई नहीं बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा. Then how do carnivores depend on sunlight for food and energy? एक बच्चा बोलेगा. हाँ, अब बोलो. हाँ. Some other student. हाँ जी बेटा, कोई और बताए. हाँ. Here is my. Carnivorous animals are eating herbivorous animals. And herbivorous animals are eating plants. And that's why if plants are not there, herbivorous animals will also be not there. And because of that, then carnivorous animals will also die. And that's why carnivorous animals are dependent on plants. Very good. Very good. That's absolutely true. You may go to your seat. Beta. Thank you. Very good. Very good. Have a clap for him. चलिए. हाँ बस अब. Let me explain. Because carnivores plants, sorry, carnivores animals, they eat herbivores animals. Herbivores animals eat plants. And plants synthesize food in the presence of light. Right? You can draw this. And you can write. If no sunlight, there will be no plants. No food for herbivores, due to which they die. अगर नहीं दे तो it means no herbivores, no food for carnivores, and thus they die. So ultimately क्या चीज नहीं थी? सनलाइट नहीं थी. सनलाइट नहीं थी तो प्लांट्स मर गए, खाना नहीं मिला. प्लांट्स मर गए तो हर्बीवोर्स मर गए, उनको खाना नहीं मिला. हर्बीवोर्स मर गए तो कार्निवोर्स भी मर गए क्योंकि उनको भी खाना नहीं मिला. ठीक है. If this question comes, then you can write this small thing. This will be complete answer. Okay. So what you will say if the question comes, write down the question.
what will happen if there is no sunlight? Answer will be life will not be possible. First thing. And second thing, there will not be oxygen in air. Air तो होगी, but उसमें oxygen नहीं. Right? लिख लो 2 points. ये पता होगा. Second भी you must be knowing, but write down this. No. Another thing. What will happen if there is no CO2 in Earth's atmosphere? What will happen if there is no carbon dioxide in Earth's atmosphere? गॉज में बेटा मैम के पीछे जो बच्चा बैठा है वो आ जाओ. Come near the mic. Quick. Come closer to mic. Switch on the mic. कुछ भी आंसर देना, बोलना जरूर है. पहले माइक ऑन करो बेटा. Some student come and switch on the mic. चलिए आगे मैम हो गया. चलिए हाँ जी बेटा, टेल मी द आंसर. से हेलो फर्स्ट. Carbon dioxide is not there, what will happen? चलिए It will not be. tell me beta, what will happen if there is no carbon dioxide in Earth's atmosphere? Plants will not make food. Plants will not make food. Yes. First is, आपने यहीं खड़े रहना. I will ask you one more thing. First is no photosynthesis. Then, if plants do not photosynthesize, which gas will be absent in the air? Oxygen. No oxygen in air. Beta, do you know which gas of air? Idhar beta, Hardy, idhar beta. Which gas of air is responsible for greenhouse effect? Have you ever heard about greenhouse effect? Carbon dioxide. Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड. बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा, बैठो. तो फिर हम क्या कहेंगे? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? एवरीबडी हु नोज ग्रीन हाउस इफेक्ट, रेज योर हैंड्स. नो, यू डोंट नो. सम few students know. Let me tell you. इधर देखो, एवरीबडी हियर. लेट मी टेल यू. सिर्फ समझना है. आगे की फर्दर क्लासेस में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको डिटेल में बताएंगे. बट फर्स्ट लिसन हियर कि ये हमारी, दिस इज अवर अर्थ. ये हमारी अर्थ है. इसके आसपास क्या है? ये हमारा एटमॉस्फेयर है. दिस इज ब्लैंकेट है. जैसे अर्थ इज राउंड और ओवल इन शेप एंड इट इज कवर्ड बाय द ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर. सोलर रेज, सन की रेज आती है. दे स्ट्राइक द, अंदर नहीं जाएगी क्योंकि अंदर तो सॉलिड है. सरफेस पे हम रह रहे हैं अर्थ के. दे स्ट्राइक द सरफेस, lose some energy and goes back to the space.
कुछ एनर्जी वो लूज करती है और फिर स्पेस में चली जाती। बट ध्यान से देखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। अगर ध्यान से दोबारा से देखो, ये अर्थ है, ये हमारी एयर है, एटमॉस्फेयर है। अगर सन से, सी हियर, अगर सन से 4 रेडिएशन, 4 रेडिएशन आर कमिंग फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सन, लेट्स सपोज, राइट। दिस इज नॉट कि 4 ही आ रही है, बहुत सारी आ रही है, बट ओनली few will move again into the space. Some, ये वाली जो है, कुछ जो है इसमें से कुछ वापस जाएंगी, बट अर्थ के एटमॉस्फेयर से फिर वापस आ जाएंगी, वो बाहर नहीं जा रही है स्पेस में। कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, कुछ रेडिएशंस को, कुछ तो बाहर चली गई, बट सम रेडिएशंस कैन नॉट एस्केप इन द स्पेस ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो रेडिएशंस अर्थ पे रह जाएंगी तो इट गिव्स वार्मिंग इफेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, हार्डी में बेटा गर्ल्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है, किस चीज में इंटरेस्ट है आपका? वो पेंसिल में क्या इंटरेस्ट है बेटा? आई एम रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग दीज गर्ल्स। न्यू कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करो, आगे चल के आपको चैप्टर्स में काम आएगा। कॉन्सेंट्रेट, लीव योर पेंसिल, लीव योर शार्पनर, छोड़ो, टेबल पे रखो अपनी पेंसिल शार्पनर, एवरीबडी। So what happens in our atmosphere? There is present carbon dioxide, right? This carbon dioxide does not allow all the radiations to move in the space. Some radiations remain in our atmosphere. Radiations क्या है? Heat है, sun की warmth है। अगर कुछ warmth हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाएगी तो it maintains temperature, high temperature, बहुत high नहीं, but it maintains positive temperature on the earth. Suppose if there is no carbon dioxide on earth, then what will happen? All radiations will move in the space. आएंगी, टकराएंगी और भाग जाएंगी, आएंगी, टकराएंगी और भाग जाएंगी। अर्थ पे तो कोई रेडिएशन ही नहीं है, तो अर्थ विल बी द फ्रोजन प्लेनेट, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो देयर विल बी नो greenhouse effect. Greenhouse means warming effect. And thus, Earth would have been frozen planet. Earth क्या होता? फ्रोजन प्लैनेट होता जिसपे कोई भी लाइफ नहीं होती। राइट डाउन दीज पॉइंट्स एवरीबडी, राइट डाउन, लिखो ये चीजें। सब एनालिटिकल क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चंस अब सीबीएसई प्रिस्क्राइब करेगी, सीधी सीधी नहीं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ऐसे क्वेश्चंस नहीं, रीजनिंग क्वेश्चंस विल बी देयर, सो राइट डाउन दीज। हाँ जी, फॉर्मेट में गर्ल्स लिख लो बेटा, लिख लो। नेपियर में मुझे ये लिख के उसके बाद ये बताना है विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू सन, सबको पता होगा आई होप। हाँ जी, नेपियर में मैम किसी स्टूडेंट को भेज दो, प्लीज सेंड सम स्टूडेंट क्लोज टू माई
चलिए आइए माइक ऑन कीजिए और बताइए। यस, हाँ जी नेपियर, बेटा जोर से बोलो। मरकरी। मरकरी। अब मुझे एक और बेटा, आप बैठो सेम क्लास। इज द मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट? इज द मर्करी, और नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट, नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट। पीछे से आओ, कोई पीछे से, नेपियर में मैम पीछे से किसी को बुलाओ। यस, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बेटा? वीनस। ओके, पर बेटा मुझे ये बताओ, है ना, कि यहाँ पे वुड बर्न हो रही है, यहाँ पे आप स्टूडेंट 1 है और यहाँ पे आप हो, या थोड़ा सा हम, यहाँ पे ये स्टूडेंट थे, किसको सबसे ज्यादा वार्म था, कि फर्स्ट को कि सेकंड को? फर्स्ट को, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा गर्मी इसको लगी। अब मुझे आप ये बताना कि ये ऑर्बिट्स है, यहाँ पे मरकरी है और यहाँ पे वीनस है। ये वीनस है, ये मरकरी है, इसका डिस्टेंस इतना है और इसका डिस्टेंस इतना है। अब बताइए कौन सा हॉटेस्ट होना चाहिए, मरकरी की वीनस? मरकरी, बट आपने कहा वीनस हॉटेस्ट है, देन व्हाई? इज इट ट्रू आंसर कि फॉल्स आंसर? ये तो आंसर तो आपका ये बिल्कुल ठीक है कि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट व्हाई नॉट मरकरी? चलिए आप बैठिए, बैठिए नेपियर, यू सेड, एंड गॉस में बेटा, यस, या मिडिल रो में जो राइट साइड पे बॉय बैठा है, सेकंड फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, आप आ जाओ गॉस में। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ, हाँ। माइक ऑन कीजिए। Although Mercury is closest to Sun, then why Venus is the hottest? Why not Mercury? And because it have Venus have a carbon dioxide. Because Mercury, हम थोड़ा सा ये कहेंगे, because Mercury lacks carbon dioxide, यही हम आया है, ठीक है, वेरी गुड, गो टू योर सीट। ये आपको पहले पता था? पहले ये बता दो बेटा, ये पहले पता था कि ग्रीन हाउस से थोड़ा पता चला? यस, टेल मी। So answer here is although, write down, although Mercury is closest to Sun, although still it is frozen planet. Why it is frozen? Because its atmosphere lacks carbon. CO2 is carbon dioxide. Its atmosphere lack, किसी को CO2 नहीं पता, पूरा लिखना कार्बन डाइऑक्साइड, due to which it cannot trap, आ तो रही है solar radiations, cannot trap solar में sun radiations.
ओके, सो दैट्स व्हाई इसके बाद कौन सा आ जाता है? वीनस. वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. कार्बन डाइऑक्साइड कईयों पे है, बट वीनस सबसे पास है, इस कारण हॉटेस्ट है. मरकरी कोल्ड फ्रोजन है बिकॉज इट लैक्स कार्बन डाइऑक्साइड. गॉस में बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ अपनी सीट्स पे, घूमो मत. ओके, सो नेक्स्ट इज we say plants are food factories. Why they are called as food factories? Because assertion is this. आप लिखना पूरा assertion. Reason. Plants convert solar energy into biological energy. Plants convert solar energy into biological energy. Yes, Pascal. बेटा पास्कल में मिडल रो में जो लास्ट सेकंड बेंच पे जो गर्ल्स बैठी है राइट साइड पे, वो आ जाओ. मिडल रो, लास्ट सेकंड बेंच, द गर्ल ऑन द राइट साइड, कम क्लोज टू द माइक, स्विच ऑन द माइक. Yes, tell me, plants are food factories. Is it true or false? True. It is true. Yes. Tell me, the plants convert solar energy into biological energy. True or false? True. This is also true. And does the reason explain assertion? Yes. Yes, absolutely true. So sit down. Very good. So what is the answer? Again, we say both assertion and reason are correct. And reason explains assertion. Now, another question. Mainly, which organ or part of plant called as kitchen of the plant? लिखते जाना है आपने. Mainly which organ or part of the plant called as kitchen of the plant? Hardy. Yes, Adi. Who will tell me? Come voluntary. हाँ जी, हार्डी में बेटा विंडो की तरफ से, विंडो वाली साइड से जो गर्ल बैठी है, आई थिंक थर्ड बेंच पे या सेकंड बेंच पे, वो आ जाओ जल्दी से. जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. माइक ऑन करो और बताइए मुझे कि विच ऑर्गन और पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट. यस, माइक ऑन करो बेटा, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, माइक के पास आओ. somebody help her. माइक ऑन करने में हेल्प करो इसकी बेटा. हाँ जी बताओ. बेटा बॉयज
अगर आपने नहीं करना तो यू कैन गो आउट ऑफ द क्लास। गाड़ी में टीचर बोलती है, टीचर को बुलाइए पहले अपने। फाइनेंस होनी चाहिए ओनली स्टूडेंट कैन टेल गर्ल। हाँ जी बेटा बताइए, विच और पार्ट ऑफ द जिसका हाथ खड़ा है वो बॉय आ जाओ जल्दी से। मैम लीव सब। बिल्कुल ठीक, बैठो बेटा। थैंक यू। आंसर इज लीव्स। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई only leaves? Why not root and stem? इसी के साथ रिलेटेड है, why only leaves, why not root and stem? एक ये तो है कि भी only leaves can perform photosynthesis, that is absolutely correct, but why not the stem and roots perform photosynthesis? Yes, गॉसेस में बेटा जो ये बच्चा अभी घूम फिर के आया है वो आ जाए आगे, आजा बेटा। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा बोल बेटा, why only leaves are called as हम्म हाँ जी बेटा गॉसेस में बोलो बेटा। Please speak question again. My question is why only leaves are called as kitchen of the plant, why not roots and leaves? Because when you plant अपना बचा खाना स्टोर करते हैं ना farm पर plant का। Because I know that only leaves perform photosynthesis, why stem and roots do not perform photosynthesis? Give me this answer. Because उनको sunlight नहीं मिलती। रूट्स को लाइट नहीं मिलती, स्टेम को तो मिलती है, स्टेम क्यों नहीं करती? चलो आप बैठो बेटा, ये एक बॉय का हाथ खड़ा है थर्ड बेंच पे, मिडिल रो में आ जाओ बेटा। हाँ Because they transfer water and minerals. बिकॉज दे नहीं, वो तो है, चलो दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, बट वो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते? यस देयर इज एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम गॉस? पीछे सबसे पीछे जो बॉय है वो आ जाओ, आप बैठो बेटा जल्दी से। हम्म Please speak question one time. Because they do not have chlorophyll. Because they do not have chlorophyll. यस दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल, राइट? सो आंसर इज बिकॉज roots and stem don't have, write down this, why don't, question है why don't roots and stem perform photosynthesis? Answer is they do not have chlorophyll. ठीक है जी, लिखना है सबने, राइट डाउन दीज। लड़ना नहीं है, हार्डी में लड़ना नहीं है बेटा, लड़ बहुत रहे हो बच्चों हार्डी में, मेंटेन डिसिप्लिन। नाउ यू नो
chlorophyll is green colored pigment. My question is, why chlorophyll is green colored? Another question, ये फिर एक और क्वेश्चन लिखिए, फिर हम सबके आंसर लेंगे. Sunlight is white light. How many colors does it contain? Then if plants, or you can say chlorophyll, absorb का मतलब होता है अंदर ले लेना, absorb maximum of red light and reflects green light. Reflect होता है ना, bounce back, धक्का दे देना. Then which light is used in photosynthesis? Write down these questions and then I will ask questions one by one. लिखो ये तीनों. हाँ जी बेटा, पास्कल में बेटा टुवर्ड्स वॉल जो बच्चे बैठे हैं वो सेकंड बेंच पे जो बॉय है वो आ जाओ, सेकंड बेंच पे आ जाओ. Chlorophyll is green colored pigment. Why chlorophyll is green in color? And because green color reflects the sunlight. नहीं, green color reflects the sunlight नहीं बेटा, because the chlorophyll reflects green light, है ना. If you say my suit is pink in color, या हम pink नहीं हम बात करते, let us say it is red in color, it means light is falling on it and it is giving out red color. Red नहीं ले रहा अंदर, red को इसने वापस भेज दिया. Is it okay? Is it okay? So your patkas are blue in color because the cloth of the patka, it is giving out, it is bouncing out blue light. अपने पास से नहीं, इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसने ब्लू लाइट को बाहर भेज दिया. So why? Because chlorophyll reflects, bouncing back, reflects blue light. Sorry, I'm sorry, not blue, green light. चलिए जी. Next is sunlight is white light. How many colors does it contain? Every student tell me your fingers. 5, 6, 7, 8 fingers की help से मुझे बताओ. Every student raise your fingers. How many? Yes, मुझे पास्कल में से नजर आ रहे हैं. Napier, how many light?
बोलो बेटा, गर्ल्स हाथ उठा के बताइए कितने। 5 6 7। हार्डी में कितने कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में, फॉर्मेट में? यस, पास्कल में मुझे ठीक आंसर मिले हैं। फॉर्मेट में कितने कलर्स होते हैं? यस, इट इज 7 कलर्स। विबग्योर आपने 6 में पढ़ा है, हैंड्स डाउन। इट इज 7 कलर्स। व्हाइट लाइट हैज 7 कलर्स। कौन से? विबग्यो, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So it has 7 colors. Then if plant, this is the leaf of plant, इस पे white light आ रही है, means 7 colors आ रहे हैं। तो tell me, इसने क्या किया है? मैक्सिमम बाकी के कलर्स के साथ साथ रेड कलर अंदर ले लिया, और जो ग्रीन कलर था इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। ग्रीन को बाहर भेज दिया, रेड को मैक्सिमम, बाकी को भी अंदर लिया, बट मैक्सिमम रेड लाइट को एब्सॉर्ब कर लिया। नाउ टेल मी कि which light is effective for photosynthesis? Yes, who will tell me? Raise your hands. Raise your hands. कोई फॉर्मेट में, कोई गॉस में, बताइए मुझे किस लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी? किस लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी? यस, फॉर्मेट में बेटा, इधर से टुवर्ड्स विंडो, जो गर्ल का हाथ खड़ा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्विच ऑन द माइक। सनलाइट। सनलाइट में है, सनलाइट में 7 कलर्स है बेटा, ध्यान से। 7 कलर्स में उसने सबसे ज्यादा रेडली और ग्रीन बाहर भेज दी। तो ग्रीन और रेड में से किसमें फोटोसिंथेसिस होगी, ग्रीन में कि रेड में? मैम ग्रीन। देखो मेरी बात, लिसन टू मी। आपके पास, आपने मार्केट से आटा मंगवाया और मैदा मंगवा लिया। मैदा उसने, आपने वापस भेज दिया कि मैदा वापस ले जा, आटा आपने घर में रख लिया। तो आपके पास खाना बनाने को, चपाती बनाने को क्या है? आटा है कि? रेड लाइट। रेड लाइट। रेड लाइट छोड़ो, पहले ये मुझे बताया, आटा की मैदा? आटा। आटा है, व्हीट है जिसका आपने खाना बनाओगे, व्हीट फ्लावर है, ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर बहुत सारी लाइट आई, बहुत सारी इसने, बट ग्रीन को उसने कहा कि वापस ले जा, मुझे नहीं चाहिए। रेड को उसने कहा ज्यादा से ज्यादा मुझे रेड दे दे। तो विच लाइट इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, रेड और ग्रीन? रेड लाइट। इसको एब्सॉर्ब, जो अंदर लिया है। सो आंसर इज रेड लाइट। राइट ऑन, राइट ऑन, आंसर इज रेड लाइट। देन one more question related to this. If leaves absorb green light and leaves की जगह क्लोरोफिल भी हम कह सकते हैं, इफ हमने अज्यूम किया है absorb green light and reflects blue light, then क्वेश्चन 1 है, what will be the color of leaves which light is effective for
फोटोसिंथेसिस आपने पूरा लिखना है, पीएस मेरी तरह नहीं लिखना है, यू राइट फोटोसिंथेसिस। नेपियर, who will tell me from Napier the first question, समझ के। पास्कल में बच्चों का हाथ खड़ा है फिर भी। एनीबडी फ्रॉम हार्डी, एनीबडी फ्रॉम हार्डी। देखिए हार्डी ने कितना सुना ध्यान से, हार्डी में कोई आंसर नहीं देता है। यस गॉज में बेटा, गॉज में somebody else नॉट, आपने आंसर दे चुके हो। somebody फ्रॉम गर्ल्स, लास्ट सेकंड बेंच पे जो गर्ल बैठी है बेटा वो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जो सिंगल बैठी है आ जाओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ आप ही। कम क्लोजर टू माइक, स्विच ऑन द माइक, टेल मी, अगर लीव्स ने ग्रीन लाइट ले ली अपने अंदर और ब्लू लाइट बाहर भेज दी, तो कलर, लीव्स का कलर क्या होगा और फोटोसिंथेसिस किस कलर में होगी, बोलिए बेटा। 12 से मुझे बताओ कि कलर, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि ये लीफ है, ये लाइट आई, व्हाइट लाइट, इसमें से उसने ग्रीन अंदर ले ली और ब्लू को कहा कि अपने घर जा। हम जो देख रहे हैं हमारी आंखों में ये ब्लू लाइट पड़ रही है। अब मुझे आप ये बताइए कि वट विल बी द, हमें लीव्स का कलर क्या नजर आएगा, ब्लू की ग्रीन? ब्लू, is blue because blue light is reflected. Very good. And what will be the, in which light photosynthesis occurs? Green. Green because green is absorbed by the plant. Very good. Sit down. But ठीक है जी, चलिए वन मोर। अब हमने कहा है क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। नो, what is the function of chlorophyll? राइट डाउन, लिखो फटाफट से। Name the plant in which stem has chlorophyll. प्लांट ने 70% रेड लाइट एब्सॉर्ब की, 70 की जगह हम कर दें 60%, 30% ब्लू लाइट एब्सॉर्ब की, देन 5% ऑरेंज लाइट एब्सॉर्ब की, देन 4% अदर लाइट्स, विबग्योर में जो है, एंड ओनली 1% ग्रीन। ग्रीन मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड है, 1%। अब आपने मुझे क्या दिखाना है, दिस इज बार ग्राफ, दिस इज लाइट, दिस इज परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस।
किसमें ज्यादा हो रही है? बट यू हैव टू टेल मी कि ये कौन सी लाइट है, ये कौन सी लाइट है, ये कौन सी लाइट है, और ये है परसेंटेज, कितनी किसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, यू हैव टू टेल मी लाइट। जल्दी से बनाओ, फिर हम खत्म करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? चलिए गॉस से शुरू करते हैं। गॉस में रोल नंबर 10, इफ यू हैव द रोल नंबर 10 है। पिछली क्लास वाला रोल नंबर 10 आ जाए, अगर अभी नहीं है तो। चलिए नहीं है, कोई बात नहीं। सो मैम वाली जहां पे मैम बैठी है उस रो में लास्ट सेकंड बेंच पे जो बॉयज है उसमें से एक बॉय आ जाए। गॉस में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। विंडो की तरफ लास्ट सेकंड बेंच पे जो बॉय बैठा है वो आ जाओ। चलिए आप ही बता दो, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। माइक ऑन करो, आप मुझे बताओ। हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोटो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल बेटा? It helps photosynthesis, that is absolutely right. But give me specific function of chlorophyll. बैठो बेटा बैठो। Anybody from the gauze? किसी और सेक्शन में फॉर्मेट में बेटा सेकंड बेंच पे जो गर्ल बैठी है वो आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आंसर करो। And it gives green color to the leaves, and it absorbs हाँ, carbon dioxide for photosynthesis. absorbs light। हम क्या कह रहे हैं अभी तक, बैठो बेटा, कि लाइट, ग्रीन लाइट ये रिफ्लेक्ट कर रही है, रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बेटा। सो बी स्पेसिफिक, आंसर इज क्लोरोफिल। एवरीबडी राइट डाउन, क्लोरोफिल absorbs sunlight या लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल का सिर्फ एक तो ग्रीन कलर टू द लीव्स, ठीक है, बट फोटोसिंथेसिस में व्हाट इज डूइंग, इट इज एब्सॉर्बिंग लाइट एनर्जी। नेम द प्लांट इन विच स्टेम हैज क्लोरोफिल, सबको पता होगा। एनीबडी फ्रॉम हार्डी? मैम किसी को भेजो बच्चे को जिसको ये पता हो, जिसकी स्टेम ग्रीन है। नेम द प्लांट हुज स्टेम इज ग्रीन। आजा बेटा, आजा, 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 आजा। यस, चलिए और किसी सेक्शन में से, पास्कल में से, यस पास्कल में से फर्स्ट बॉय आ जाओ, आओ। Ma'am, he know from Hardy. Please discuss his answer. इसी में से आंसर दे रहा है, हार्डी में से। हाँ जी बेटा बोलिए। Autotrophic. कौन सा प्लांट बेटा? Autotrophic plants. ऑटोट्रॉपिक में तो क्लोरोफिल है, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लांट जिसकी स्टेम ग्रीन है? नहीं तो मैक्सिमम की तो हम स्टेम कहते हैं दी दैट इज ब्राउन, बट जिसकी स्टेम है, फोटोसिंथेसिस है।
कोरिएंडर भी गलत नहीं है बिकॉज हर्बेशियस प्लांट्स है, दैट इज ऑल्सो राइट, बट कैक्टस में एक अडेप्टेशन है कि उसके लीव्स रिड्यूस्ड है और ये। चलिए अब जल्दी से फॉर्मेट में बेटा लास्ट में जो गर्ल का हाथ खड़ा है, आ जाओ जल्दी से बताओ ये 1 2 3 4 कौन सी लाइट्स है, आ जाओ जल्दी से क्विकली। माइक ऑन करो बेटा। हाँ, विच लाइट दीज रिप्रेजेंट्स, फर्स्ट वाली जिसपे सबसे कम फोटोसिंथेसिस हो रही है, कौन सी लाइट है बेटा? It is green. Absolutely right. Next, second. Red. Very good. Third वाली। अच्छा पहले फोर्थ वाली बता दो। Very good. This is blue and this is others. Absolutely. बैठो बेटा, बैठो। ठीक है जी। So I think it's departure time now. Yes or no? अभी है कि अभी हमारे पास टाइम है कि अब डिपार्चर टाइम है, मुझे कोई बताए बेटा। If we have time, raise your hands. मैम ऑलमोस्ट ओवर। ऑलमोस्ट ओवर, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब क्या करना है बेटा? हैंड्स डाउन, पास कर, नीचे नीचे हाथ नीचे। आई थिंक एवरीबडी हैज गॉट द असाइनमेंट। ठीक है, यू मस्ट बी डूइंग फर्स्ट चैप्टर इन योर क्लासेस, राइट? सो डू दिस असाइनमेंट, वी विल डिस्कस दिस असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम। ओके, ठीक है, ये करना है। आज हमने बात की है मेनली क्लोरोफिल की, हमने बात की है कि हमें फोटोसिंथेसिस की क्या क्या चाहिए। एक और चीज लिख लो, राइट डाउन वन मोर। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, water gives C6H12O6 plus 6 oxygen. तो पहले तो you should know that CO2 is carbon dioxide, H2O is water, C6H12O6 is glucose, and O2 is oxygen. My question is, why we write some numbers with these molecules? Write down the question. Why we write numbers in front of molecules? इन फ्रंट, ये नहीं सिक्स सिक्स वाला नहीं, ये वाले जो आगे लिखते हैं, ये हमने क्यों लिखे? ठीक है, यू विल गिव मी आंसर। कोई देगा मुझे आंसर फॉर्मेट में? फर्स्ट गर्ल, हाँ जी बेटा बताइए, आ जाओ आ जाओ। मैम टू बैलेंस। वाई बैलेंसिंग, बिल्कुल ठीक है, आंसर इज फॉर बैलेंसिंग। My question is now, write down one more question. Why do we balance chemical equations?
Why do we balance chemical equations? Can anybody tell? हाँ जी, कोई पास्कल में, हार्डी में, गॉस में, नेपियर में हम बैलेंस क्यों करते हैं? somebody else, सिर्फ एक दो बच्चे, वही नहीं, वही नहीं, कोई और। चलिए, फर्मेंट में एक गर्ल है, आप बताइए बेटा, जिसका हाथ खड़ा है आके बताओ। लेट मी एक्सप्लेन दिस, फिर फटाफट से आ जाओ। Ma'am, to make the chemical location correct. टू मेक द केमिकल इक्वेशन करेक्ट। चलिए बैठो, मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। बेटा, कोई भी चीज वी कैन नॉट क्रिएट एनी केमिकल, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी केमिकल। गॉस में बच्चे बैठ जाओ, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी मेड। फॉर एग्जाम्पल, आपको हम 1 किलो जो है ना वो आटा दे देते हैं। इधर देखो, 1 किलो हमने व्हीट फ्लावर दे दिया, उसकी जब चपातीज बनाओगे, फॉर्म तो चेंज होगी, चपाती बन गई है, बट उसका भी वेट करोगे ना, दैट विल बी 1 kg, राइट। तो जितने कार्बन यहाँ है उतने कार्बन ही यहाँ पर होंगे। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन है, तो यहाँ पर भी 6 कार्बन ही होने चाहिए। जब हमने ये नहीं लिखा था तो क्या था, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे 6 करने के लिए हमने आगे 6 लिखा, ठीक है। तो वाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? आंसर लिखिए, बिकॉज बिकॉज मैटर इज नाइदर क्रिएटेड। लिख लो, राइट डाउन, बिकॉज क्वेश्चन है व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस? बिकॉज मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। राइट डाउन, because matter is neither created nor destroyed, but it can change its form only, but it can change its form only। इसलिए उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको बैलेंस करते हैं। एक मुझे बैलेंस करके बताना जरा जल्दी से। दिस इज हाइड्रोजन H2 plus O2 gives H2O। अब देखो यहाँ पे, it is 2 atoms of hydrogen, here also 2 atoms of hydrogen, but here is 2 oxygen, here is 1 oxygen, so we put 2 here, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। बट अब यहाँ पे एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट हियर, बट यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितने हो गए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4, तो 4। अब हम क्या करें, हम यहाँ पे 2 हमने यहाँ पर ही लिख दिया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, O2 O। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इज इट ओके? ठीक है। चलिए अब जल्दी से अब आप करिए, C plus O2 gives CO2। आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। अब हम एक और चीज इस पे थोड़ा सा हम ये कर देते, CO2 नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको बैलेंस करो, डू योर ओन बैलेंस। यहाँ O2 है, कार्बन तो ठीक है, अब हम यहाँ पे O2 करने के लिए क्या करें, नीचे कभी भी नहीं लिखना, हमेशा इन फ्रंट लिखना है। हु विल टेल? पास्कल में से जल्दी से कोई बताएगा? सबने कॉपीज अंदर रख दी है, कैसे बताएं? गॉस में कोई बताए, आपके पास कॉपीज है, बताओ जरा क्या करें। यहाँ O2 है, यहाँ पे सिंगल O है, क्या करें इसको 2 बनाने के लिए? यहाँ से 2 हम माइनस तो कर नहीं सकते। हाँ जी, पास्कल में, हाँ बेटा बोल। Okay, we give the के सामने 2 लगा, राइट। तो बट अब यहाँ पे तो कार्बन भी 2 हो गया, अब क्या करें बेटा? हाँ जी, यहाँ पर अब कार्बन भी 2, ऑक्सीजन तो ठीक है 2 हो गए, कार्बन भी 2 हो गए, अब क्या करें? हाँ जी, कोई और, कोई और? हाँ,
मैम सीख के आगे आएगा मैम। यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। इज इट ओके एवरीबडी क्लियर कि हमने यहाँ पे 6 क्यों लगाया? इज इट ओके? ठीक है, जिस जिसको समझ में आया रेज योर हैंड्स। जिसको ये समझ में आई चीजें रेज योर हैंड्स। नेपियर में किसी को समझ नहीं आया बेटा? ओके, I think most of the students have done, right? So thank you students, thank you teachers. Be attentive in the class. We will do many new things next time. I will, show you many PPTs next time. Beautiful, beautiful flowers, beautiful parasites, saprophytes and all. ठीक है? Okay beta, thank you very much. Bye bye. Thank you teachers.